आजकल क्या होता है ना सर कि लोग अगर डाउन आ जाते हैं वो बोलते हैं सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया मैं, राइट? और कल तो कुछ आएगा नहीं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ चैलेंजेस आए तो आपने कैसे ओवरकम किया? ओवर टू यू सर। So, student life में, I lost my father very early when I was in graduation part one. That was my personal setback and personal loss. And sudden, my dream to be a lawyer got shattered. तो वो अचानक ही सब कुछ बिखर गया. ओके, ऑसम। ऑलराइट, थैंक यू मुरली जी। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुरली जी, हमें बताइए आपकी लाइफ जर्नी कैसी थी और आज आप एक उम्दा लीडर हैं। आपने अपना पूरा इंटायर जितने भी सर्विस दिया, आपने काफी कंपनीज में लीडरशिप पोजीशन पे थे आप, और एचआर में भी आप थे। सो वहां पे आपकी जर्नी कैसी रही? ओवर टू यू सर। So, I'm a small city boy, but what we learn और जो हमने सीखा अपने इनिशियल करियर में, इनिशियल लाइफ में, that what matters is your subject matter expertise. Do you do best every day? Do you know your subject matter best? And do you deliver it best? So ये फाउंडेशन बना लाइफ में, एंड वो कंटिन्यू करते गया, लाइफ में जर्नी चलते गई. Started from a small city in my education, went to a bigger university, got myself educated, launched my career. HR was not a career of choice initially. My first love was to be a lawyer and study law, which I did. But finally, I fall in love with HR, and I decided to pursue my career in HR. So that's the initial journey I picked up, and trust me, I got the great managers, mentors in my career, which pulled me up rather, and helped me building my own career and building performance in the organization. And also, by the way, we built great teams at several occasions in multiple startups. So those foundations helped me handling the diversity, handling adversity, I'll say that, and maneuvering well in a adverse turf, or in a difficult situation. So that's something which gave me in foundation from a middle class upbringing to moving to a large town, and sustained well working with various organizations. So that has been my early journey. Little roller coaster initially, but finally I reached to a turf which was better, smooth, and did quite a bit in my professional journey. वेरी वेरी उम्दा। बहुत उम्दा मुरली जी, थैंक यू सो मच। बट यहाँ पे आपने बोला कि डाउन, अप्स एंड डाउन थे, तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि किस तरीके के, क्योंकि आजकल क्या होता है ना सर कि लोग अगर डाउन आ जाते हैं तो बोलते हैं सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया मैं, राइट? और कल तो कुछ आएगा नहीं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ चैलेंजेस आए तो आपने कैसे ओवरकम किया? ओवर टू यू सर। So, student life में, I lost my father very early when I was in graduation part one. That was my personal setback and personal loss. And sudden, my dream to be a lawyer got shattered. तो वो अचानक ही सब कुछ बिखर गया. But when you are grown up in a middle class background, but with strong values, right, in the life, and learning and maneuvering life in difficult situation, when you learn best in your middle class philosophy and middle class values. And probably those were the strength I inherited from my parents, my family, my community. And from there, my journey of maneuvering in adversity started during my student life. I remember, barely surviving with very small amount of scholarship in the college, but continued. So never left my ambition to be something, which my parents should have felt proud on. My father should have felt proud on, my mother.
And after some point of time, my mother became my father too. So she played a dual role of being mother and being father. But being a very religious, spiritual lady, she helped me, making me understand that देखो ये ऊपर नीचे तो चलता रहेगा जिंदगी में, लेकिन अच्छा वही करता है जो इस ऊपर नीचे को ठीक से मैनेवर करता है, सर्वाइव करता है वही, और थ्राइव भी वही करता है. So if you learn to handle ambiguity, if you learn to remain motivated in adverse situation, looking at your larger goal of life, the key is कि आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए और आपको अपने पर्पस में कन्विक्शन जरूर होना चाहिए. If you have a very strong conviction in your own purpose in the life, if you really believe it, your value system supports it, I think one can do better even in adversity. That's my initial, phase of life, which helped me growing further in my career and in life, of course. आपने काफी अच्छी बात बताई कि इतने टफ सिचुएशन, मतलब इससे ज्यादा कोई टफ सिचुएशन नहीं हो सकता, लूजिंग योर ओन फादर. सो इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना बुरा, राइट? पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर अस, बट इसमें भी अपने आप को कैसे रखना. और आपकी मॉम ने दोनों ही रोल प्ले किए, मॉम एंड डैड बोथ, एंड शी हेल्प्ड यू. इससे ऊपर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती. यू टॉक्ड अबाउट वैल्यूज, यू टॉक्ड अबाउट फैमिली कल्चर, ये बहुत उम्दा है और उसी ने आपको एक सहारा दिया, एक नर्चर किया. वेरी वेरी वेल सेड. परफेक्ट मुरली जी. मैं आपके क्या बोलते हैं, अभी आपके मन में और आपकी हाव भाव को देख के मुझे लग रहा है कि आपको उनकी जरूर याद आ रही है. Right now you're feeling a little emotional. Yes, Diksha, why I was very impressed with your talks, your thought process, because I have seen in my life the power of a woman. Right, I saw my mother as someone who was a superpower, with a superpower. Right, she did everything for me, being mother and father both. In spite that we had no huge earning for our family, she was the superstar of my life. Later on, my wife became second superstar of my life when she stood by with me at every crisis, every ups and downs, every challenges, and she became the rock solid support to me in my life, in my career. So respect for diversity came in much before, while it came in my culture, in my own value system, but also experience the power of diversity, power of a lady in my life, which was first my mother, who was a rock star. Then second came in my wife, who became my second rock star, and third, my daughter. Right, she recently went to Columbia, very proud student, master student of Ivy League, which is one of the best in the world. She's my third rock star, and she's also a challenger. So she challenges me that, well, while I understand you did this well, but you didn't do this very well. What do you think about it? And what are you going to do about it? So she's another challenger in my life. So third rock star, second generation rock star in my life. But and I see when I saw you, I saw somewhere my daughter who keeps challenging me, keeps inspiring me. And when I'm feeling down, she's the first person who will able to sense that, are you feeling a little low today? What are you thinking about? What's going in your life? And how you're going to handle this? So even she is in the United States, still we talk, probably I talk most to her than to anyone else in the family or in the environment. But she's someone who pulls me up when I'm down. She's someone who inspires me when I'm feeling a little low. And probably she's one of the most resilient female I've seen in my own life, after my mother. So legacy continues. Legacy begins and legacy continues. Very well said. सबसे पहले thank you so much मुरली जी, आपने मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया. Thank you for this. It really motivates and inspires me to do a lot more. Diksha, it is from my heart. It's very genuine. And I'm a person, someone whom you may speak to others, and they will also say that he will only say what he really means it. So I'll not say anything which I don't mean it. And that's something which I have kept in my life. I think so far it has worked well. Thank you so much मुरली जी. अब एक वो फिल्मी डायलॉग याद आ गया, ज्यादा नहीं बोलते हैं रुलाएगा क्या पगले.
So let's move forward, मुरली जी. चलिए इमोशन, वरना दोनों ही इमोशनल हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. मुरली जी, आप तो अब एक काफी प्रोफेशनल लैडर पे चढ़ चुके हैं और आपने काफी ज्यादा लर्निंग्स हासिल की है. तो अगर किसी को लाइफ में एचआर की जर्नी में जाना है, से फॉर एग्जांपल पीपल वांट टू बिकम एन एचआर, तो एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल करियर में कैसे कैसे पर आपको हम आगे बढ़े और एक उम्दा एचआर प्रोफेशनल कैसे बने, क्या क्वालिटीज हमें एज अ ह्यूमन सबसे पहले होनी चाहिए टू बिकम एन एचआर प्रोफेशनल? व्हाट डू यू सर? सो मेरा ये मानना है कि टू बी अ ग्रेट एचआर प्रोफेशनल you must be a great human being first, right? And you should genuinely try to be a human being which people admire, right? And first you admire yourself in your own eyes. If unless we have admiration for ourselves in our own eyes, unless we stand up and straight look at our own eyes and say that, well, I do what I mean to do and I say what I do, unless that, it doesn't come, number one. Number two, respect and humility, which is something which I feel is universally required from any professional or even any family member, any bright student, any kid, anyone. So respect for others. We know that we cannot make everyone happy, but nobody stops us to be respectful to everyone, right? We also understand that in life, in professional life, many times we take hard decisions. It's not that we are not genuine. Who is stopping you not to be genuine? Everyone, right? So be very genuine in your approach. Be very candid but kind in your heart. Be humble. Always be grateful to whatever you have got in your own life. You never know, when you look down, you will see many people, those that will not, have what you have today in life. While I'll not say I'm a very someone who chased the dream, very rigorously, but not that I am always a dissatisfied person from life. No, I find my small achievements, small steps, small stages in my life, which helps me little cheering up and look life to be a more brighter one. Very nice. छोटे छोटे वो बोलते हैं ना, छोटा छोटा मिलाते जाओ बड़ा बनाते जाओ. So that's very important. Very very nice, मुरली जी. जी, great. So हाँ जी, you want to say something? So another one is there is no substitute of hardworking. There is no substitute of thorough working, right? Life is not about shortcuts in life. I have also seen in my own career people growing, becoming prosper, growing in a professional ladder, even with little shortcuts. But at some point of time in life, you feel that, well, being thorough was more important than taking the shortcut of life, especially in professional area. So that's one. Second is, have very strong domain expertise for which you are being employed by an organization. Being your personal character, and by the way, character is not that easily available today. It is something which is very difficult to have. If you have your own character, which you feel admirable in your own eyes first, in the eyes of your family members second, and in the eyes of the community and your colleagues, that is something which is very important. So have a strong professional ethics, have very strong personal ethics, have a strong domain expertise. Be hardworking, smart working, but hardworking. Be thorough, be genuine, and last, be very authentic, right? And that's something which is very important for all the students, all the budding professionals, those who are growing, wants to grow genuinely without any shortcuts, something which is required. बहुत अच्छे से आपने सभी चीजों को सम अप करके बोला कि एक अच्छा इंसान तो बनना है. ये सारा सॉल्ट शुगर लगेगा और अच्छी सी चाय बन जाएगी. बट यू हैव टू हैव दीज इंग्रेडिएंट्स, अदरवाइज सब करवा है लाइफ में. वंडरफुल मुरली जी. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. तो हमें ये बताइए सर, रास्ता अगर मुश्किल है, सपोज करिए कि दीक्षा है, उसको एचआर बनना है, राइट? एंड आई एम लाइक जस्ट अ स्टूडेंट, फिर मैंने पास किया, फिर मैंने एमबीए ज्वाइन किया, फिर मैंने वहां से भी पास किया, फिर मुझे लगा
एचआर में कुछ करते बिकॉज आई हैव दीज क्वालिटीज दैट यू सेड, पर वहां पे फिर मुझे लगता है एचआर नहीं, मैं कुछ और कर सकती हूँ, मे बी सम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बिकॉज आपने बोला ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वो तो होना ही चाहिए। तो अभी ह्यूमन बीइंग अच्छा है, सब क्वालिटीज है, तो अपना रास्ता कैसे डिसाइड करें, इवन दो मैंने कुछ और डिग्री हासिल की है, तो इस चीज से थोड़ा बाहर निकालिए सबको। ओवर टू यू सर। देखिए, एचआर में जाने के लिए आज की डेट में आई गिव वन एग्जांपल, वन एनेक्डोट, दैट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर नॉट फ्रॉम एचआर डोमेन इन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि जो आज की डेट में मोस्टली जो एचआर पोजीशंस पे हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, या तो बिजनेस के किसी फंक्शन से आए हैं, या एचआर वाले हैं वो भी बिजनेस फंक्शन के पार्ट है। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स इन द इंडस्ट्री which you can see that, and there are people those who are even at top positions at HR, but they are also wearing the business hat somewhere. So who gains the most respect is while having domain expertise in HR, but also equally proficient in handling some bit of business, which is critical for overall organization success. So, for example, if you're coming from customer experience side, right, you want to launch yourself in HR, you have a great flair of communicating with people, understanding people. So do you know who are the most successful people in HR are from psychology background, not from MBA HR background essentially. Why? Because they understand the human psychology better. I was just before this call, I was talking to a large group of faculty members of a B school, a university, and I asked that being a teacher, do you know how the neuroplasticity works in an organizational setup, right? How the neurons in your brain acts and behave, which helps you maneuvering with the changes better. हमने तो एचआर पढ़ा है जी, हमने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो हमें पता नहीं है. So somewhere I believe the interdisciplinary study approach is now picking up much faster. You are studying HR, great, but you also study one interdisciplinary subject which is going to help you becoming a better HR professional, and which is also going to help you becoming a better business professional later. Because my dream was always being part of the business, being part of the leadership team who takes decision about the business. And when I don't have capability, you talk to my CFO about the business number. When I don't have capability, talk to my sales guys about how it's penetrating and enhancing the per customer revenue is something which people are expecting from HR. So HR, for HR, I'll say non-HR for HR is a various interventions one need to launch it. But in summary, if you really want to be a good HR professional, try to be also one interdisciplinary subject and master on it, which helps you becoming a good HR professional, either in the talent analytics. Today in the talent analytics, the best people are coming from software side because they understand their statistics better. They understand the technology better, which handles the big data, which handles your blockchain, which handles your virtual reality, which handles your virtual proximity, right? Today, the days of employee engagement survey is gone because people are looking for everyday sentiment and mood survey of people, right? So as a CEO, every day you look for what is the mood of my people today? What is the sentiment prevailing in my organization? So the annual rituals are taking back seat, and same with annual performance assessment process. If your assessment is not happening every day, your performance are not being captured and you are not reflecting on that, the annual ritual days are over. Good, bad, that is still large fraction of HR people still believe, and they are very strong supporter of these annual rituals. But I'm sure someday they will realize that the days of annual rituals are gone. So interdisciplinary approach, understand what is needed for HR to do in a business, which may not be what you have learned for past 20 years, but what you need to do today. Today, we are all working in a hybrid working environment. Now, whatever we have learned, say the faculties were discussing about, sir, what would be the right approach for performance assessment and development? I say that yet to be evolved, because this is the first appraisal cycle which we are going to be running after pandemic. Now, there was no KRAs, there was no goal setting for last 2 years.
Still you have to do performance assessment. How you are going to do performance assessment? So things are evolving. Whatever we have learned and done for last 20 years, the time has gone that we should keep, cherishing those great days. The days are again, I'll say that things have become, so it's S curve, no? You go, you high, and you become reach to a situation where you need to restart. So we have reached to the bottom of S curve. We are about to restart. Many have already restarted. Many have to restart, and it's a journey. So S curve will remain there in life everywhere. परफेक्ट. ठीक है मुरली जी, आपने हमें ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि वो कर्व की आपने महत्वपूर्णता बताई, और आपका जो लास्ट सेशन था विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी इसी स्टेज पे है जहां पे आपने इवोल्यूशन की बात की, इवॉल्विंग की बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण है. ग्रेट सर. अब आप मुझे ये बताइए सर कि आपका दिनचर्या कैसे होता है, मतलब कि एज अ यूजुअली व्हाट हैपेंस टू स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स हु आर यंगर, लाइक less than 45 or maybe 30, they might think कि बड़े लोग ना कुछ अलग ही काम करते हैं. So I just wanted to understand from you कि how you spend your Saturday Sunday when you're not at work, or what are your hobbies, and how we as a professional keep ourselves motivated and inspired every day and day out. Over to you, sir. So I'm a little different than many of my friends, those who are very big fan of late evening parties, coming early morning back home, taking a nap up to little late, and then starting day. I sleep early and I rise early. That's my life. By nature, I'm a very a spiritual person. So I understand the difference in religion and being a spiritual, and I'm a spiritual person, right? So I firmly believe that. I start my day with walk, and especially the weekends are great walk days. So I go for a long walk in the weekends, enjoy the environment, nature, and come back, do little meditation, and then start my journey, do little planning, coming back to my home desk, my home office, and do little planning and start my day. So before I sleep, little recap for what I did today, what I'm going to do tomorrow. But morning time is dedicated to little bit going near to the nature, and doing something for my own emotional well-being, physical well-being, mental well-being, and then following the regular routine of that. Once in a while, rather mostly now it is very frequent that I go in the hills. I spend time in hills. I really feel excited, seeing the mountains, especially the White Mountains. That excites me for some strange reason. Especially in pandemic, I would have gone multiple times to the hills, and I found a place which is very interesting, one of the largest magnetic field in the world. And I enjoy meditating there. I go, it's a place in Almora. I enjoy going there and enjoy the White Mountains. I think I'm enjoying that more, and it is pulling me multiple times. And when I was imagining, I never imagined that I'll spend five trips in the Himalayas in a year, which was unbelievable. But so be it. A new hobby, little photography, enjoying nature. That's something which brings me very close to. I see the winds, the airs, the plants, mountains. I enjoy talking with them. You are a nature loving person as well as a very spiritual person who can actually talk to the God. Wonderful, Murli ji. Yes. I do talk to hills rather. God तो अभी मिले नहीं कभी बात करने के लिए, but हाँ, I talk to myself. अपने से बहुत बात करता हूँ, पहाड़ों से बहुत बात कर लेता हूँ, पौधों से बात कर लेता हूँ, फूलों से बात कर लेता हूँ. So I can stay out of population for many days, keep talking to hills and plants, and I'm liking it more. Awesome, मुरली जी. बहुत बहुत उम्दा. तभी जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, वो फेयर एंड लवली लगाने से चमक नहीं आती, पर नेचर को लव करने से जरूर आता है. So that's very important. अच्छा मुरली जी, अब हमें बस आखिरी पड़ाव पे हम प्रश्न के, तो आप अच्छा सर चलिए मुझे बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम में, वो बहुत ही ज्यादा मतलब शोर है हर जगह. जैसे बोला जाए YouTube पे बहुत कुछ है देखने को, दे लूज देयर टाइम एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अगर उनके पास कुछ और काम है
तो वो काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आज के मिलेनियल्स की बात अगर मैं करूं, देर आर OTT मीडियाज, देर आर यूट्यूब, देर आर सीरीज, नेटफ्लिक्स एंड व्हाट नॉट, एंड देन लाइक यू सेड, सो अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो क्या क्या चीजें हमें दाव पे लगानी पड़ेगी, क्या क्या चीजें हमें हटानी पड़ेगी, बुरी आदतें से दूर होना पड़ेगा? ओवर टू यू सर, लास्ट मैसेज टू ऑल द यंग मिलेनियल्स, ओवर टू यू। देखिए, दाव पे तो कुछ नहीं लगाना, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज, राइट? दे हैव ओनली गेन, दे हैव टू ओनली गेन एंड दे हैव टू ओनली अर्न फ्रॉम देयर करियर, फ्रॉम देयर लाइफ। तो दाव पे कुछ नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टडिंग हार्ड, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लानिंग फॉर देयर ओन करियर and planning life in the career, not that whole life has become a career. So that's something very important. But yes, they have to little cut down on the digital engagement. I'm not saying that they should be completely aloof from the digital instruments, because those are helping them keeping abreast with the developments in the world, which is required, but not up to a limit where it started, it starts pulling their neurons and brains in a complete negative energy, right? That's something little away from the detoxification from digital equipments, which is required. So they should say that दिन में मैं 4 घंटे I'll detox myself from digital equipments. That's one, which is very important. And those 4 hours probably will be the most productive 4 hours for their life and for their career. Second, continue having a very strong vision and the roadmap for their life and for career. So a very strong purpose, and they have to find that purpose. And this is important for even people like us to help young comers, students, to help them find their purpose. Because शायद हमें कोई हेल्प नहीं मिले, लेकिन हम तो किसी को हेल्प कर सकते हैं ना. So finding a strong purpose to chase their dream, they should start seeing the dream which helps them not to sleep. The dream should compel them not to sleep. So a compelling dream has to be there, and the compelling dream will only come from a strong purpose. If they don't have a strong purpose of life, वो compelling dream होता नहीं है. और compelling dream वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है कभी. You will not able to sleep. You will have to you will keep doing daydreaming. That ऐसा होगा तो क्या होएगा, ऐसा होगा तो कैसे होएगा. And वो तभी होएगा जब you have a very strong purpose of your life, starting from a student life to a professional life, to a father, to a brother, to a son, right? And the more you grow, your relationship grows further. So strong purpose always, and purpose is backed by a strong logic, a strong rationale. And once that is there, you have your dreams which will chase you to reach near to the purpose, and that helps most. But a detoxification is required. Even for us, detoxification is required. Little away from our phones. It's not even bad many times to switch off your phone for an hour or so, and be with yourself, be with your own gadgets, be with your own books. So little more reading habit. Today, people are losing reading habit. Do you know that? Mostly they listen on the YouTube. Absolutely. It is very funny. One of my, so एक दिन हमारे यहाँ पंडित जी आए वो पूजा कराने के लिए. तो हमने कहा हो सकता पंडित जी आए तो फिर वो कथा कहने के लिए वो किताब चाहिए होती है. तो हमने कहा, तो देखा पंडित जी के पास तो खाली आता है, कोई किताब तो है नहीं. तो पंडित जी ने फटाफट YouTube खोला और कथा शुरू कर दी, उससे देख के पढ़ना शुरू कर दिया. तो हमने कहा वेरी गुड. फिर मैंने कहा कि पंडित जी आपको कैसे पता है कि इसमें जो लिखा है ठीक लिखा हुआ है? बोला देखिए जी गूगल पे है, यूट्यूब पे है, बिल्कुल ठीक होएगा. So even people those who used to read books are going away from the books, right? Many a times we remember when I was in Times of India, our business chairman, he used to say that मुरली वो जो अखबार में जो इंक की जो खुशबू होती है ना, जब वो सुबह खुलता है अखबार पहला और वो खुशबू जब तक नाकों में नहीं आती ना, वो अखबार पढ़ने का मजा नहीं आता है. एक बार किसी ने खोल दिया तो फिर अखबार पढ़ने का मजा नहीं आता है. तो जब तक वो बुक्स का जो एक स्मेल है ना, द एसेंस ऑफ द बुक, द कंटेजियस एसेंस which chase you, which pulls you to read more pages, यदि वो ना हो ना तो लाइफ में थोड़ा मजा अधूरा रह जाता है. So little habit of reading, meditation, be with nature, spend a little more time on your emotional and mental well-being, which is gradually becoming very, very important. People are losing patience much faster. People are having suicidal tendency. Even class 10 and 11 people, bache, they go for stress. They go for treatment to the counselor that I'm in the stress and I'm feeling disastrous. I have a suicidal tendency. ये हमने नहीं देखा था कभी. ये
नया जनरेशन का नया फीलिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एड्रेसेबल है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग राइट। आई एम श्योर मेनी थिंग्स कैन पीपल डू राइट with little more close to ourselves, to books, to nature, little detoxification from the digital, equipments, and looking at your larger purpose of life. Have a strong roadmap, have a logic, follow it, chase your dreams. I think उसके आगे कुछ ज्यादा बचता नहीं है करने के लिए। बाकी सारी चीजें तो आ जाती हैं, रास्ते पे आ जाती हैं। That's my यस मुरली जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, आपसे मैं सहमत हूँ। आपने बोला दाव पे तो नहीं लगाना, तो लिसनर्स प्लीज दाव पे कुछ नहीं लगाना। मैंने पूछा था पर सर ने बोला बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको वो सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं जो मुरली जी ने बताए। और आपने एक पॉइंट बड़ी अच्छी बताई जहां पे आपने बताया डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करना। अभी ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। जब आप बुक्स खोलते हो ना, तो क्या मतलब, हम 5th-6th स्टैंडर्ड में होते थे तो नई नई किताबें खरीद के लाते थे, उसमें क्या सेंट होता था। इट्स लाइक मोर देन परफ्यूम, राइट? बट आजकल क्या हो रहा है कि हम चार्जर्स और पोर्टेबल चार्जर्स ढूंढने में लगे रहते हैं, स्मेल तो दूर की बात है। तो वी बिकम लाइक अ ज़ॉम्बी। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हम लोग 50 फाइलें डाउनलोड करते हैं, उस 50 में 5 भी नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी डाउनलोड फाइल्स इतनी बड़ी होती है, उसमें 4-5 से ज्यादा पढ़ नहीं पाते, तो बाकी किताबें तो बंदी रह जाती हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं जो हमने पैसे खर्च करके किताब खरीद के लाए और एटलीस्ट के शुरू के 10 पन्ने नहीं पढ़े, ऐसा कभी होता नहीं है। तो दैट्स अ डिफरेंस। वो डाउनलोड में डाउनलोड रह जाता है बेचारा, लेकिन किताबें जब सामने दिखती है ना, तो आपको रिमाइंड बुलाती है कि आओ भैया, खोलो पन्ने, खोलो, पढ़ो, डिस्कवर करो। तो वो एक जो चार्म है ना, वो एक अलग दुनिया है। किताबों की दुनिया अलग है, जो कि डिजिटल इक्विपमेंट्स रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, आपको किंडल आ जाएगा तो किंडल पे किताबें पढ़ लोगे, स्क्रॉल कर लोगे, लेकिन जो किताबों में मजा है वो शायद नहीं है। और देखो, हमारे जैसे लोग, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग किताब के बीच में ना पीपल के पत्ते रखते थे। वो जब अभी कभी मिल जाते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती, कब रखा था, कैसे रखा था। बहुत तो फूल भी रखते थे, बाय द वे। So it's a different phase of life, but it is a great excitement reading books and keeping yourself, with the pace of life, which helps you growing. वेरी वेल सेड मुरली जी। मेरे को आज भी याद है जब हम 90s 95 की बात करें, तब तो मशीन्स नहीं होते थे, घर घर में लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स नहीं थे। तो 95 में हम लोगों ने तो वो वक्त देखा है जब बुक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था। पर आजकल के जो युवा हैं, जो थोड़े 10 साल या 15 साल या 20 साल के हैं, उनमें ये जज्बात थोड़े खत्म है। क्योंकि आई टेल यू व्हाई। जब आप फोन से करते हो तो आपको चार्जर ढूंढना पड़ता है, पर जब आप बुक पढ़ते हो तो चार्जर बिल्कुल नहीं ढूंढना पड़ता। सो दैट्स वेरी नाइस। नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब वो हमारे पंडित जी जब कथा कह रहे थे ना, तो उनका बैटरी खत्म हो गया, और द मोमेंट बैटरी खत्म हुआ, कथा बंद हो गई। तो हमने कहा, पंडित जी ये क्या हुआ? काश आपके पास किताब होती तो वो मेरी कथा तो बंद नहीं होती ना। सो ये कथा को बंद ना करे। लेकिन लाइफ, हमारी एक लाइफ एक स्टोरी है, एक जर्नी है, और जर्नी है जो हम बहुत जिससे प्यार करते हैं हम लोग, राइट? तो वो कथा बंद तो ना हो ना चार्जर के चक्कर में। एंड सो आपने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं आजकल, सो ह्यूमन चार्जर्स, पीपल आर देयर, सर्टेन पीपल दोज आर ह्यूमन चार्जर्स, दे मोटिवेट पीपल, दे चार्ज पीपल, एंड दोज आर वर्चुअल चार्जर्स। तो लेट अस बी अ ह्यूमन चार्जर। हम खुद को भी चार्ज करें, दूसरों को भी चार्ज करें, एंड हमारी जर्नी चलती रहे। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मुझे तो लग रहा है कि हमें थोड़ा और वक्त देना चाहिए, बट वक्त का थोड़ा तकाजा है यहाँ पे। पर थैंक यू सो मच मुरली जी। आई एम श्योर सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और सबको बहुत उम्दा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।
शायद इकबाल ने कही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो आप खुद को कुछ बुलंद करिए, बाकी चीजें तो आपके साथ आएंगी और जिंदगी ऐसे चलेगी। जिंदगी का नाम है चलना, और डेफिनेटली खुदा पे छोड़ दे, अपना कर्म पे फोकस करे, जो मुरली जी ने आज हमारे इस ब्यूटीफुल सेशन में हमें समझाया। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद, आप अपना थैंक यू, ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय, थैंक यू।